वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड और देश की दिग्गज टायर कंपनी सीएट लिमिटेड हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। 1958 से कंपनी ने की शुरुआत। आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की है ये कंपनी, हर्ष गोयनका ग्रुप की, माफ कीजिएगा। 110 देशों से ज्यादा देशों में इनका कामकाज है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ कुमार सुबैया साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, 9 साल से ज़्यादा लंबे समय से कंपनी के साथ है और यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव भी रखते हैं। पहले मैं आपको नतीजे बता दूं, कल बाजार बंद होने के बाद आए थे रिजल्ट्स और रेवेन्यू यहाँ पर 8% बनकर आया था, लेकिन कामकाजी मुनाफा EBITDA 20% घटा है। मार्जिन 15% से घटकर 11% के आसपास आते दिखे और मुनाफे में रही है कमी 41% की, 122 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। सुबैया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, आप आराम से हिंदी इंग्लिश जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे जवाब दें, और अगर आप सवाल न समझ पाएँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपसे पूछ लूँगा। सबसे पहले सर बताएं, रेवेन्यू तो आपका ठीक है, टॉप लाइन अच्छी है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स वीक दिख रहे हैं, थोड़ा EBITDA आपका घटकर आया है, मार्जिन्स कम हुए 15% से 11%, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो थोड़ी कमजोर रही है, वीक रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है सर? Good morning. Thank you for having me on your show. Thank you, sir. Primarily, the reduction in margins year on year as well as quarter on quarter is on account of increase in the raw material costs. And so therefore, that led to drop in our gross margins. Though we have mitigated part of the drop in gross margin through control over discretionary costs and also through a higher volume growth, primarily on account of increase in raw materials. Within the raw material basket, natural rubber prices moved up sharply in the last quarter as well as in the previous quarter. Last quarter, natural rubber prices reached 15-year high in India. It touched a level of about 250 rupees per kg. And natural rubber prices were hovering around 150 rupees per kg same time last year. So that is a primary reason. Part of the impact on account of raw material costs has been mitigated through some price increase, but price increase that we have taken during the quarter, we were not able to recover the entire impact of raw material. तो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से मार्जिन पर दबाव हुआ है। जो नेचुरल रबर, जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है टायर कंपनियों के लिए, उसके दाम 15 साल की ऊंचाइयों पर, तो मार्जिन पर दबाव आना तो स्वाभाविक है। अब सर बताएं, इस क्वार्टर में आपकी वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है और वैल्यू ग्रोथ कैसी रही है, दोनों के बारे में समझाएं। और अब फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, यहाँ किस तरह की डिमांड देख रहे हैं आप? ये पहले क्वार्टर 2 में हमारा ग्रोथ year on year 8% था और quarter on quarter 4%. Generally, quarter 2 revenues would be quarter 1 के सामने थोड़ा कम होगा। ये साल में हमारा ग्रोथ अच्छा था, इसलिए quarter 2 में हम ग्रो कर सकते थे। So generally among 3 verticals, we were able to grow in double digits in the replacement market and also in the international business. Our growth rate was low single digits in OEMs. So that's the way the quarter 2 ended. And the revenue that we achieved in quarter 2 of close to about 3,300 was the highest that we have ever achieved. There is some momentum going into quarter 3 on account of festive season, on account of strong pipeline in the international business. So, generally, November would be a little weak month post-festive season. Okay, so therefore, we look forward to a double-digit kind of a growth year on year into quarter 3. Quarter 3 versus quarter 2 could be a little weaker, but we'll see how things go. राइट सर। सुबैया सर, आपका थोड़ा डेट इस क्वार्टर में बढ़ा है, 1885 करोड़ तक पहुंचा है। डेट रिडक्शन को लेकर कोई कंपनी के प्लान्स हैं फिलहाल? Yeah, you are right. In the quarter 2, our debt moved up. By close to about 300 crores, 290 crores was the kind of increase, primarily on account of increase in the raw material inventory. As I mentioned earlier, natural rubber prices shot up significantly in India. That was primarily because the transit time on imports went up from about 20 days to 60 days, leading to, buying little larger quantities in the international business, and suddenly that 60 days came down to around normal level of about 20 days. So we ended up receiving more imported raw material. We hope and to normalize it in the quarter 3 and part of quarter 4. So that was one reason. Second, we also paid a dividend, dispersed dividend
of about 300%, which translating to about 121 crores in the month of September. So these two largely had an impact on overall our free cash flows. In the last 1.5, 2 years, we brought the debt level down from 2,200 to about 1,600 crores. Now it's moved up to 1,880. We look forward to bringing the debt level down in the coming quarter and the subsequent quarter. But overall, our leverage ratios are healthy. So even at this level, our debt equity is about 0.45 and debt EBITDA is about 1.2, 1.25. So it's comfortable. We are comfortable with this level of debt in terms of leverage ratios. परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। कुमार सुबैया साहब, आपने समय दिया और रिजल्ट पे डिटेल में हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की। बहुत बहुत